Hi, and a very warm welcome on Mensa with ISCA, Indian Specialized Counseling Academy, trying to make the difference by understanding and making a lot of things to be understood by everybody. Hi, how are you doing? Anshi, Suraj, Reena, Preet, and Subhash Sharma, I think, if I have got it right. And we are going to be continuing the season. We are going to be talking about what we left at yesterday. Yesterday we were talking about do you know yourself, and today we are on to the second episode, the second session, and we are going to be talking of your core values and your beliefs, your value systems and beliefs. But before that, let's hear from you guys. Archika is yet to join. Let's see. And Anshi, let's hear from you. Then we also have Reena. Go on, Anshi. So you weren't there yesterday, right, Anshi? No, ma'am. Actually, yesterday I was having I was giving my exam, so that's why I was not in the class. Absolutely. How did the exam go? You were taking your exam and you appeared for an exam. So It went well, but I would say the exam is so hectic. I mean, it's so long, like 3 hours 20 minutes. So, and that's computer based exam. So after appearing in that exam, I was having a bad neck pain. So yeah, I would say 3 hours of online exam. Yeah, what exam was that? It's like currently I'm in final year, so I am preparing for my placement. So that was a placement exam. Oh, that too in center. So in center there are so many people, and that's so like there was so what I can say sunny day. So yeah, that's why it becomes so stressful. Yeah, right now the heat is having toll. Hope you had water, some glucose water and things like that with you, because heat is to be taken care of and we don't have to have the heat strokes. And hope the exam went well. And let's hear from Reena, and Archika has also joined us. Go on, Reena. Hello, everyone. Yeah, actually, I couldn't attend the yesterday, so I was quite busy in my. So absolutely all right. Absolutely. Anything in particular you want to build on, Reena? Anything what we are discussing today? Do you want to tell anything about that? Actually, I want to follow you guys first, and then I'll put in my thoughts. Absolutely okay with that, Reena. Just stay tuned. We will be talking some things, and I hope they make sense. Archika, let's hear from you about the topic and how are things. Hi Ashima, hi everybody. I hope everybody is doing good. Today's topic is quite related to the yesterday what we were discussing, right Ashima? Absolutely. Yeah, so it's like are your beliefs and value systems faulty? So first we need to understand that what do we mean by our belief systems? So first I want to hear from you guys that आप लोगों को क्या लगता है कि बिलीफ सिस्टम जो है क्या होता है और बनता कैसे है? Ashima, will you throw some light? What are your Absolutely, Archika. Thank you very much. Anybody else who wants to talk about this before we go on into the details? And I think Friday we are trying to do a visualization. If you guys can come in on time, because if we start something like that, wherein we take you through a meditative journey, if people join late, it will be a little difficult thing. So we'll plan and talk about it. Because that will also get you into the reflective mode, into understanding yourself better, connecting with yourself better, and understanding your values and belief systems. So going on to when we talk about, the belief systems and the core values, there are, first of all, what are the core beliefs and what are the value systems? So when I talk about beliefs, we all know something which we believe in, that is ingrained, that has gone deep rooted. Our information processing has happened and we believe in it means
that they guide our behavior, our decisions, and our world view. Means whatever we do in your life, it will depend on it. For example, जब भी एग्जाम देने जाओ दही चीनी खाने जाओ. Now whether that is a faulty belief, not a faulty belief, is it a part of your good value system or not good value system, that is debatable. But the idea is that anything which combines together in making your decisions, in your making your thought processes, in making your behaviors, is your value system and the core beliefs. And there are a lot of things which add to your core beliefs and your value systems. There are a lot of factors which help you in making your core beliefs and value systems. And they can be anything, So let me just start and give you all the pointers. And if anybody has to add anything. Archika, if there are any comments, please do read them out. And then we'll be able to go ahead with that, right? So just to all right. So when we talk about the first major important factor which influences our core beliefs and value systems is our upbringing and the family, which means the environment in which we grow, the way our family interacts, the way... Before you go into factors, please let me explain that what actually people think what belief system is. So I think for some people it's like set of principles, set of ideas, and maybe they are like principles that they are guiding us to provide direction and meaning to our life. And sometimes if अगर उनको layman language में समझे तो they believe जो होते हैं हमारे internal commands होते हैं. Internally हमें जो command मिल रही होती है कि ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए. So these are our internal kind of commands जो beliefs है. And one thing is very important to know कि beliefs जो होते हैं वो हमारी choice होती है. We have a power to choose. And जो जहाँ से वो originate होते हैं उसके we have various sources which Ashima is explaining and I'll further add on. And something very important I want to tell you, Ashima and everybody, that first 7 years जो होते हैं हमारे childhood के, those are extremely critical because तभी जो होता है हमारा brain जो होता है वो कुछ नहीं कर रहा होता है, but actually our brain is soaking everything around them. Whatever it actually happening around us, brain is actually receptive at that time. We are just receiving and taking things in. And that is a very very beginning and very starting point जहाँ से हम कहते हैं ना हमारी beliefs और values और हमारा बहुत कुछ आना शुरू होता है. So Ashima, you carry on, I'll add up. Yeah, sure. So when you talk about core beliefs and value systems, as we are talking about, they form your lives. And as Archika said initially, absolutely that's one thing which is very important, that our cognitions, our core values, our core belief systems, they are made in the childhood. And in the childhood, we are not, there to reason out because our reasoning abilities develop much later. So when we are in our adolescence, they say that the adolescents can reason out, but they basically at that time the frontal lobe is still developing. But again, the way the parents build us up, the way the parents, our environments, our parental values, our systems build us, we may have the ability to rationalize. Again, it very much depends on our upbringing. So when we talk about being a child, we are literally receptive. We are just taking things in. That's the time we are programming everything. How Papa behaves, how Mama behaves, how Dada Dadi behave, how Nana Nani behave. In one particular situation, if there is a problem, is my mother going to panic? Is my father going to shout? So this is what we are learning each and every time we are observing, we are watching, or we are told. So there are observed behaviors which we learn. There are taught behaviors which we learn. Okay. So they form our core beliefs and our value systems. So the very first point is upbringing and family. So the way our family is, the religious teachings,
मंदिर जाना है, हाथ जोड़ने हैं, सब लोगों का आदर करना है, गरीबों को खाना देना है, पक्षियों को दाना देना है, गाय को रोटी देनी है, whatever, all this is getting built up in our in our childhood. And the second point is important is education. जब हम घर में होते हैं, घर से सीख रहे होते हैं, और हम जब स्कूल जाते हैं तो घर के साथ साथ स्कूल ऐड हो जाता है. So there are two places now where we are learning. So formal education which we start taking, and also the informal teachings from our friends or from our teachers, the way behave. You must have seen a lot of children around you trying to behave like their friends, trying to copy their friends, क्योंकि उनको लगता है अरे जो मेरा फ्रेंड है वो तो ज्यादा कूल है, तो मैं अपने फ्रेंड की तरह एक्टिंग करूं. और ना चाहते हुए भी बहुत लोग जो है एक्ट्रेसेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. सलमान खान का वो ब्लू स्टोन वाला ब्रेसलेट बहुत कॉपी किया लोगों ने. सलमान खान का हुड दबंग स्टाइल बहुत कॉपी किया लोगों ने. क्यों किया? क्योंकि हमें लगता है यार स्टाइल स्टेटमेंट है. ये एक एज ग्रुप के लोग करते हैं, या कई लोगों का मन करता है नहीं करते हैं. So it is the education which we are learning, and then peer influence comes with education because your friends form होते हैं. You are trying to get validation. अरे मेरे को मेरा फ्रेंड मेरे को एक्सेप्ट करे, इसके लिए मैं उसकी तरह से बिहेव करूं. सोशल सर्कल्स में एक्सेप्ट हो जाऊं तो मैं उन लोगों की तरह से बिहेव करूं. सलमान खान जो पहन रहा है उसको देख के लड़कियां खुश होती हैं, तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए. अरे ये वाला पोज कितना अच्छा है. आई रिमेम्बर गोविंदा जब था ना, गोविंदा वॉज वेरी न्यू इन टू द फिल्म इंडस्ट्री, तो उस टाइम पे सब लड़कों ने चटाक कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे. एवरीबडी यूज्ड टू वेयर दोस चटाक क्लोथिंग्स लाइक गोविंदा. नाउ द गर्ल्स ट्राइंग टू लुक लाइक द गर्ल्स ऑफ दीज, जो कॉलेज की जितने भी आजकल मूवीज आ रही हैं. नाउ वी कैन ऑलवेज डिबेट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, but we are forming our value systems and our beliefs from all these things: family, education, peer influence, media, society. अब तो social media ने हमारा बहुत ज्यादा दिमाग के ऊपर असर करना शुरू कर दिया है. Then one more thing which is very important is your personal experiences. आपको चोट लगी, आप मम्मी के पास गए, मम्मी ने कैसे रिएक्ट किया, पापा ने कैसे रिएक्ट किया, क्या वो चिल्लाए, क्या वो घबराए, क्या उन्होंने बोला अरे बेटा कोई बात नहीं हो जाएगा, चोट लगी है तो क्या हो गया. छोटे बच्चों को तो लगती है, खेलते हैं तो आओ दवा लगा देते हैं. और दूसरा होता है मम्मी हो लग गई, हो ये क्या हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर प्रोग्रामिंग देम. कंप्यूटर, हम भी कंप्यूटर्स हैं, है ना. ये अलग बात है कि जो आपने एआई को, कंप्यूटर को सिखा दिया, जब तक उसको आप चेंज नहीं करोगे वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता. मगर हम ह्यूमन बींग्स के पास एबिलिटी है रीजन आउट करने की और चेंज करने की. इसी को आज के जमाने में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. दैट वी कैन चेंज आवर न्यूरल पाथवेज, वी कैन चेंज आवर थिंकिंग पैटर्न्स, वी कैन चेंज आवर बिलीफ सिस्टम्स इफ वी रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग. द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज इनसाइट. हमें इनसाइट होना जरूरी है. तो हमारे एथिकल मॉरल कंसिडरेशंस क्या हैं, हमने उस दिन बात की थी इड, सुपर ईगो और ईगो की. इड क्या है? आपकी वाइल्ड डिजायर. आपको कुछ लगता है यार अभी मैं क्लास में हूँ मगर मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, तो आपकी ईगो आपको क्या बोलेगी, भाई पेपर चल रहा है, अभी आइसक्रीम नहीं खानी है, पेपर कंप्लीट कर लो जरा, नहीं तो टाइम ओवर हो गया तो फिर रह जाएगा तुम्हारा पेपर. तो वो आपका ईगो आपको बता रहा है, रियलिस्टिक पिक्चर दे रहा है. और तभी हम बोल रहे थे ईगो आपकी वैल्यू सिस्टम है. वो तभी उस दिन हमने टॉपिक डाला था बिग ईगो. तो उसी के साथ वापस आते हैं, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं. छोटे बच्चे एनालाइज नहीं कर पाते हैं, बट आप लोग सब इस एज के ऊपर हैं जहां आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग है. आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आप सोच समझ सकते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, समाज किस तरह से चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है. आप समाज की हर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं. और जब आप रैशनलाइज कर सकते हैं तो यू इवन ट्राई टू चैलेंज, यू वांट टू चेंज. सो your environmental factors of all and every kind, they influence your core beliefs, your value system. Anshi is writing something down. Anshi, would you want to speak? Anshi, did you disappear? Where are you? Oh, you are here.
Do you want to speak, Anshi? You're writing something, because sometimes what happens, following them, sometimes we can make them become our followers. किसी को फॉलो करके उसको अपना फॉलोअर कैसे बनाते हैं अंशी? I can't see you, बच्चा. So I gave all these points of how our value systems or core beliefs are formed. और ये हमें बहुत बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं. Before we go on any further, is there anything which you want to ask, add, question? Anybody? Yes, ma'am. Do you think like it's not 100% like conventional? There are some innate beliefs in ourselves which we actually have no idea about, which we cannot control. So I understand like society, culture, and teaching, all that affects, but there are other things which are innate, which are natural in us, which we have no control over. So they also affect our like behavior towards anyone, right? So like, can you give me one example? I don't know. I'm just sure that there are many. Like, can I give you an example? Then probably you build on that. Okay. With personality traits. For example, let me talk about myself. I feel I am somebody who doesn't get afraid of saying anything in presence of anybody. That is my innate personality trait. That means I don't like people lying. कोई मेरे सामने झूठ बोलता है और मुझे पता चल जाता है कि इंसान मुझे झूठ बोल रहा है, जब तक मैं उसको ये नहीं समझाऊंगी या उससे बात नहीं करूंगी कि भाई मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, मुझे रिलेशनशिप्स के अंदर इस तरह की बातें पसंद नहीं है, मेरे सामने झूठ जो बोलता है मैं उसको अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं देती हूँ. ये मेरी पर्सनालिटी का इनेट कैरेक्टरिस्टिक है या ट्रेट है कि मेरे को झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी सिचुएशन. ये मेरा एक इनेट पर्सनालिटी ट्रेट है. क्या आप इस तरह की किसी चीज की बात कर रहे हैं? Yes, ma'am. Introvert, extrovert, and also some like aggression. How much aggressive a person? Maybe aggression depends on societal conventions. Maybe, yeah. Aggression. आपका नाम नहीं है. XX बोलूं कि आपको 4X बोलूं? Ma'am. My name is Puneet. You know me already. Puneet. Yes, ma'am. All right, Puneet. When you say aggression is a learned behavior, my dear friend. ये environmental होता है. Introversion or extroversion, maybe it can be some. This is debatable. Ashima, I'll explain to him. Actually, what Ashima ma'am is talking, we have various kind of traits, and what she was talking comes in a two type of traits. We have common and individual traits. Okay, so जो common traits होते हैं वो almost everybody has it. But जो individual traits होते हैं हमारी personality के, वो unique होते हैं. मतलब जो हमारा पर्सनल डिस्पोजिशंस होते हैं ना ट्रेट के, वो इंडिविजुअल के हर किसी के अलग होते हैं. एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ऑलपोर्ट. दो वी हैव अदर ट्रेट्स आल्सो, जैसे कार्डिनल ट्रेट होता है एक करके. एंड कार्डिनल ट्रेट का सबसे लेट्स नॉट कंफ्यूज विद द वर्ड्स अर्चिका. No, I'm saying if you, Ashima, let me finish. If you just give them traits, so we have hell lot of traits. But if you really want them to understand, so you want to give them, categories. कि जैसे महात्मा गांधी का जो पीस लविंग वाला ट्रेट था वो कार्डिनल ट्रेट था, क्योंकि वो कॉमन नहीं था ऐसे सब में. But no, that's not true. Most of the people are peace loving people. That's not a trait which was common to him. हर आदमी चाहता है शांति हो हर तरफ. No, चाहता और उसको पूरी तरह अपने अंदर अब्सॉर्व करके रखना और उसकी तरह. That is debatable. You are bringing Mahatma Gandhi. That is a very debatable. So let's not quote names. I can give you example from books, and I never talk without facts, or something is written somewhere. I never talk without that. No. See, bringing in political figures. I give it to you. Fine. Yeah. Bringing in political figures is something which I would. So cardinal traits जो होते हैं वो unique नहीं होते, like वो बहुत ही spread नहीं होते वो जल्दी से, बट जो इंडिविजुअल होते हैं वो यूनिक होते हैं, और जो कॉमन होते हैं वो जनरली हम सब में होते हैं. सो व्हाट पुनीत वाज आस्किंग कि जो इनेट क्वालिटीज होती हैं
When we talk about this कि हमारा belief system कहाँ से आता है और हमारा innate वाली जो qualities है, so belief system के जो sources हैं, environment, events, knowledge, past experiences and visualization. Visualization is what we do with our brain's eye, not with our own eyes. जो हम दिमाग की आंखों से हम देखते हैं, चीजें इमेजिन करते हैं, वो विजुअलाइजेशन हमारा, ये सारे सोर्सेज मिलके हमारे बिलीव्स को बनाते हैं. कहते हैं ना आइडियोलॉजीज है हमारी, तो क्या है वो हमें गाइड करती हैं, बट वो सेट ऑफ बिलीव्स ही तो हैं. झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, सबके साथ अच्छा करना है, ये हमारे बिलीव्स हैं. पर ये हमने कहाँ से सीखे हैं? इवेंट्स हुए, किसी ने नॉलेज दी, आसपास लोग बोलते रहे, धीरे धीरे ओरिजिनेट होता रहा, जो हम सुनते रहे, फिर बार बार सुनते रहे, चाइल्डहुड से वो चीजें आती रही और फिर वो हमारा बिलीफ बनता रहा. अगर मंदिर के सामने से निकलो तो हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है, जोड़ने चाहिए. मम्मी ने बोला बार बार, पापा ने बोला बार बार. आज मैं निकला था तो मैं हाथ जोड़ना भूल गया था, ओहो शायद इसीलिए कुछ ऐसा हो गया. एंड वैल्यूज आर लाइक ऑनेस्टी, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ये हमारी सारी वैल्यूज है. आशिमा यू कैन ऐड ऑफ, देन आई व्हेन विल कम टू द फॉल्टी, देन हाउ ये फॉल्टी कब हो जाते हैं. So when we discuss it, I'll add up. So what Puneet was saying, Archika, was he was talking about traits. Like I was explaining him that I have that innate trait. ये शायद common नहीं होगा. कुछ लोग situations में झूठ बोलने में वो कहते हैं चलो यार झूठ बोल के काम निकलता है तो निकाल लिया जाए. So that is what I was trying to give the example, and Archika explained a lot more aspects to it. So Puneet, would you want to build on that, dear? Oh no ma'am, I understood. But उसको भी हम ट्रेट में नहीं डालेंगे झूठ, वो हमारा सिचुएशनल जो होता है ना बिलीव्स, उसमें आ जाता है कि अगर इस चीज को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, दैट्स फाइन. इट्स नॉट अ ट्रेट. See, it is my innate characteristic of my personality. I don't like people lying and I don't like lying. So that is a very particular. Now I can talk about myself. Yes, I have this. I am not going political, हाँ अर्चिका. क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से और तुमने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये नहीं अच्छा लगना है, मतलब नहीं, एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि मुझे पसंद नहीं आते हैं. क्योंकि जब भी ऐसे लोग होते हैं मुझे अच्छा लगना शुरू, मतलब बुरा लग रहा होता है. तो दिस Okay, I'll give you one more. I am dabang. Dabang means I don't care what people think. If I have to do something and if I think it is right, I'll go after it. I am dabang. Oh, dabang is the word. Now, do you think being dabang, Salman Khan is dabang in his movies, all right? But I'm dabang as a person. If I know I'm right, I'll go after anything. So, do you think this is a personality trait or a belief or a value system? This must have developed with your childhood thing, whatever had No, I was born with it. I was born with it. Your every sibling, your father, mother, everybody had it? Or has I'm it? born with it, my dear friend. Nobody else is like me. अगर बचपन में तुम्हें किसी ने डराया होता, अर्चिका, मेरा डायग्नोसिस नहीं करना है मेरी जान, मेरा डायग्नोसिस नहीं करना है. पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर I think we'll come to personality traits. What Puneet wanted a little understanding, I think we've given him a lot of explanation of that. So, any other pointers, guys? I think Archika and me had a lot of debate, tried to explain a lot of things. I told you my two personality characteristics. मैं दबंग हूँ और मुझे झूठ बोलना ना बोलना पसंद है ना सुनना पसंद है. अब आप लोगों में से क्या आपके कुछ ऐसे कोर वैल्यूज या कोर बिलीव्स हैं जो आप बताना चाहेंगे यहाँ पर और डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि उन बिलीव्स के ऊपर ही आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, उन बिलीव्स के ऊपर ही आपके बिहेवियरल पैटर्न्स बनते हैं, आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस बनते हैं. जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि अगर चोट लगी और मम्मी कहेगी ओ मेरे बेटे को लग गई, जल्दी डॉक्टर को लाओ, द चाइल्ड विल प्रोग्राम दिस, और उसको लगेगा जब चोट लगती है तो रोना है. मगर अगर दूसरी मदर ये बोलेगी नहीं बेटा कोई बात नहीं, चोट लगी दवाई लगा लेंगे ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, यू आर अ ब्रेव बॉय, यू आर अ ब्रेव गर्ल, तो वो बच्चा उसी को प्रोग्राम करेगा, उसका इमोशनल रेस्पॉन्स वैसा ही होगा. सो दोज इमोशनल रेस्पॉन्सेज आर ऑल्सो बिल्ड इन ऑन योर वैल्यू सिस्टम्स एंड और बिलीव्स कि भाई चोट लगी है रोना नहीं है, चोट तो लगती रहती है, और दूसरे को ये पता है चोट लगती है तो रोना है. So you will have those emotional responses. और आपके
जी Like societal conventions also have like an effect on your perspectives. I just wanted to, I just want you to reassure me that I read somewhere that people who live in socio-centric countries, they tend to focus more on background. For example, if you show them a painting and there is a main character at the center of that painting, they'll remember more about background, more about the relation of that background to that main character. But if you show that painting to a individualistic cultured person, he will not remember much about background, but he will give you much more points, much more accurate points about the main character. Absolutely. Cultural differences are going to be there. The way your society behaves, your culture is. आपके कल्चर में अब आपको बॉम्बे और दिल्ली के कल्चर बताते हैं. बॉम्बे में घरों के अंदर, because the houses are small and a lot of people, small नहीं, उनका religious belief ये है कि घर के अंदर चप्पल नहीं जानी चाहिए, right? तो उनके घरों के अंदर चप्पल नहीं जाती है. उनके घरों के बाहर ही एक बॉक्स बना हुआ है, चप्पल वहीं उतरेगी. और अगर घर में पहनने वाली कोई चप्पल है, ज्यादातर लोग घर में बिना चप्पल के चलेंगे. Otherwise, they will keep a special chappal or a special footwear for the home inside. Whereas when you talk about people in Delhi, they don't bother. उनको ये नहीं है कि बाहर से मिट्टी वाली चप्पल आ रही है, गंदी चप्पल आ रही है, इसको नहीं, घर के अंदर नहीं पहनना है. So now जो बॉम्बे वाला दिल्ली आएगा उसको थोड़ा अटपटा लगेगा. दिल्ली वाला बॉम्बे जाएगा, कहेगा यार ये क्या है, what is this? So absolutely, Puneet, cultural difference is bound to be there. Utsav, yes, you've joined in. Go on, you're saying something. Utsav, we made you a speaker, my dear. Would you want to speak? Aditya is also unmuted. Otherwise, Aditya, आप बोलो, फिर उत्सव बोलेंगे. So if you don't know, you need to click on that mic icon at the below if you want to unmute. Yeah. Utsav new है? हाँ, Utsav is new, definitely. And yes, I was saying about how much does biology, genetics and evolution play a part in this, because as you were saying that many people tend to follow Salman Khan, Govinda and all, and they try to fit in. So this tribal desire to fit in with the rest of the society, and this desire to to follow a tribal leader, like Salman Khan, so that we can be more accepted and liked by the tribe as a whole. So I think this is something innate, just like Putin was saying, and we all have this to some degree. Putin, you call me Putin one more time. Bro, you are Putin from now. Your name is... He said, Puneet, do you know him? Or that was a mistake? So you know what? He's trying to, because he knows you, now he knows your value system, he knows your beliefs, that if he says something like that, you're not going to mind. So he can afford to do that, right? So he has gotten into that value system and belief system of yours. Achika, you want to say something, and Utsav is not able to unmute. I was just adding and I was clarifying. The Aditya was asking. Aditya, this has come from the environmental factor we discussed yesterday in our personality development. कि हमारे बहुत सारे जो biological, psychological, environmental factors से mix करके जो develop होती है personality. So this social influence जो आता है ये हमारा environmental factor से आता है. Because वहाँ पे हम लोग ये देख रहे होते हैं कि socially acceptance कितनी हो रही है, हमारी social deprivation कितना हो रहा है. Family also contribute in a majorly, ठीक है? And family में बहुत सारे sub headings है which I'll not be able to explain right now. And educational factor भी बहुत बड़ा role play कर रहा होता है. So there is a debate going on between the people here, Reena and Utsav. Utsav wants to speak. I think, Achika, can you just hold on? Let's hear from him. I think he's been able to unmute. Yeah, I said that, Utsav, please unmute yourself. So it was a spelling mistake. Sorry, Utsav. All right. So absolutely, he wants to speak, right? So that is why I just mentioned. सूरज, रीना बोल रही थी अनम्यूट करो
यू म्यूट योरसेल्फ नहीं बोल रही थी, वो गलत था, वो टाइपोग्राफिकल एरर है, इस बात पे भी लड़ाई शुरू हो सकती है. तो लेट्स जस्ट बी इन पीस. उत्सव अनम्यूट करो माय डियर. देखो इतने सारे लोग आपके लिए बॉदर्ड हो गए हैं. देखो हमारा वैल्यू सिस्टम और हमारे बिलीफ्स ये बताते हैं अगर कोई नया है, अतिथि देवो भव, अतिथि को अच्छे से आदर करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए. तो उत्सव भाई अब अनम्यूट कर लो. Yeah, while he unmutes, right? So I just wanted to add few more points. Go on. So like very good conversation. So as you have already mentioned, Ashima, that our value systems is built up on many factors. It includes our upbringing and environmental factors, how our relatives treat us, how our family members are treating us, right? So according to my experience, this environmental factor plays a very important role in building up the values and beliefs. As you have mentioned one point, that this Bollywood, right? So we have been brought up by watching these serials and other stuff, right? So my only point here to mention was, if there was some quality serials or quality movies which add up few morals, so that the kids who are watching can learn something from them. So by that way, the upbringing of the kids would have been more better. Because as a kid they don't know what is wrong and right. That is my own personal experience. When I used to watch movies, right? So I used to consider it as a role model, that whatever they are doing is right. So this is how we have to sit in the dining table, and then we have to eat only bread and butter. This is a good thing to eat. And whatever advertisement they used to make, right? We have to drink fruity or rasna and all those kind of advertisement used to come, right? So I used to fight with my mom that this is the good thing. I mean, we should have it, we should eat Maggie and all those stuff. So then she used to scold us that this is not good and all. But I never used to believe her. I used to believe on advertisement and then movies. I don't know why, but I had that belief that maybe she doesn't want to spend money, that is why she's doing all these things. So that's beautiful. Now I have realized that these things, all this advertisement, all these things are all like it's based on business. And now I am refraining from giving my kids all these things, Maggie, rasna and all. So now I realized that whatever our parents used to taught us, that teach us that these things are not good for health, they are just showing it for advertisement. So these the movies and environmental factors, it plays a very important role in bringing up the kids and their minds, bringing up values. So I strongly believe in that. Very true. Whatever you said is beautiful, Reena. मम्मी की वो सेंटेंस याद है, जब खुद माँ बनोगी तब पता चलेगा. Yes, she used to say that. Yeah. So now I'm refraining from making my kid watching those songs and all that, those Bollywood songs, vulgar songs, right? So I just want to change that thing, which I have been brought up with. So I really want to change that thing and bring some values in the in bringing up my kids. So rather than Reena stopping and completely उनकी लाइफ से उन चीजों को निकालने के लिए, you have to make their beliefs, you have to change their beliefs, you have to tell them that this is not good and this is good, why they are good, why this is bad. उनको बिल्कुल आंखों के सामने से आप बॉर्नवीटा हटा दो क्योंकि आपके घर में नहीं आता है, बट वंस दे विल बी ऑन देयर ओन, तो वो कभी बॉर्नवीटा एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्या, चॉकलेट नहीं खाएंगे क्या. अगर हम ये बैड हैबिट्स की बात करते हैं सोसाइटी में, तो घर पे नहीं होती है बहुत सारी चीजें. Yes, she doesn't know what is Bournvita actually. Yeah, so because, actually nowadays the thing is we have everyone has LED and it is all running through internet or Wi-Fi, right?
in most of the houses. I'm just telling you कि अगर हमें अपने बच्चों की लाइफ से कुछ चीजें निकालनी है तो उनको गलत और सही को समझाना होगा. ये नहीं कि आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड हो जाता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, हैबिट्स, वी हैव टू टेल देम. when we say कि बच्चे स्कूल जाते हैं और आजकल के स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, किड्स आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ, तो ऐसा तो नहीं उनको घर में सिखाया हमने, और घर में तो ऐसी चीजें नहीं रखते हम. बट अगर उनको वो चीजें फैक्टर एक्चुअली तो पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है. बॉर्नवीटा होता है, इसका टेस्ट ऐसा होता है, टेस्ट अच्छा है, पर ये टेस्ट आपके हेल्थ के लिए बहुत टाइम तक अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके लॉन्ग रन में जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो आपके इफेक्ट्स होंगे, वो ठीक नहीं है. इसकी जो स्वीट वाली क्वालिटी है इतनी स्वीट है कि इट्स नॉट गुड फॉर यू. सो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, एंड दैट इज हाउ वी शुड लर्न इन लाइफ. that's how we became, हमारी जो हैबिट्स बनती हैं, हमारे जो बिलीव्स बनते हैं, कोर बिलीव्स बनते हैं. एंड आउट ऑफ 3 every 1 core belief is socially pressured होता है हमारा. So rather than doing that, we should do like this. Does that make sense to you? Yes. Yeah, actually going forward, I have to see that because she has started going to school. Now she is bringing up few things from school that, my friend got Maggie and all those things. Yes. I'm not giving anything at home, but she is just exploring it. But yeah, यही प्रॉब्लम्स होती हैं जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सारी चीजों से डेप्रिवेट कर देते हैं, उनको बचाने के लिए कि नहीं ये भी नहीं करे बच्चे, वो भी नहीं करे बच्चे, ऐसा भी नहीं देखे बच्चे, वैसा भी नहीं देखे बच्चे. बट वो सब कुछ बाहर जब एक्सपोजर उनको मिलता है तो उनको समझ नहीं आता कि पेरेंट्स को समझाऊं, पेरेंट्स को बताऊं, या मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं बाहर ही करता रहूं. व्हाट टू डू, करूं क्या मैं? बट व्हेन दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, घर पे ही सब कुछ समझा दिया जाए, बता दिया जाए, दिखा दिया जाए कि ऐसा ऐसा होता है, लाइफ में ऐसे स्टेजेस आएंगी, यू शुड नो इमोशंस कैसे होते हैं, टीनेजर्स से बात की जाए कि देखो क्रशेस भी होते हैं, अट्रैक्शन भी होता है, इन्फैचुएशन भी होगा, एंड विच इज वेरी वेरी नॉर्मल, इट शुड हैपन. आप अपने हिस्से की गलतियां भी करोगे, एंड करो, प्लीज करो, बट प्लीज हमें लूप में रखो. आदित्य has unmuted. Can we quickly hear to him? Yeah, Aditya. Reena will come back to you in a minute. Okay. Go on, Aditya. So I was just saying, like, I was wondering that I was reading this article, like, does morals comes from, societal conditioning, or are they something that is we just have as human beings, inside ourselves, from birth? Like if for example we were not touched by society at all, then would we be still like human, like, peace loving creatures, or would be more like beasts, weirds, just no sense of morals, human values that we have. So that's absolutely, that is the vital question. और वो रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या बोली जो आप पढ़ रहे थे? It is not clear. I think it is a bit of both. I have read something on this, and it's bit of both. Like we learn some of the morals by rationality, and some of the morals are innate in us, because they also did a lot of experiments. So what they did to make sure that we are not thinking and we are not rationalizing, they give our brain a task to remember something, and while remembering that task, we have to solve a moral conundrum, and after few tests, they realize that we are taking moral decisions without our conscious judgment. We are taking moral decisions based on our intuition, purely based on our intuition and emotions. So some of the morals are innate in us, and some we learn. So that's what Aditya was asking. Yeah, I think it's due to how humans are social creatures, right? So to fit in with society, we need to have some more values, like for example, some sympathy, empathy, or whatever. Like we need these things, that's why some of these are biologically programmed in us, because if we don't have this, then how would we be social? How would we form healthy societies? Like even before the advent of the society we have now, the pre-society era, even then we lived in tribes, even though we didn't have the knowledge we have now.
So why is that? Because we should have some sort of values program. छोटा सा एग्जाम्पल ये है, जब बच्चा पैदा होता है उसको कैसे पता होता है भूख लगी है तो रोना है, और रोऊंगा तो मेरी मम्मी आके मेरे को देखेगी, सुसु किया, पॉटी किया, भूख लगी है, मेरी मम्मी और माँ को पता भी चल जाता है कि मेरे बच्चे की कौन सी आवाज कैसी है. अब ये किसने सिखाया उस बच्चे को? अब ये दिस इज एन इनेट इंस्टिंक्ट ऑफ दैट चाइल्ड, राइट? So going back to what you guys are saying, absolutely okay. We are absolutely all right. We are all built with some, and we take a lot from the environment, and over periods we keep changing them. If we don't change them, we will be caught in loops and patterns. We'll have distortions. Like Reena is saying, and Archika was building on it, कि उसको अपनी बेटी को बॉर्नविटा बताना पड़ेगा, मैगी बताना पड़ेगा. Adolescence में, I think Reena's daughter, if I'm not wrong, is 5 years. Reena, am I right? Yeah, she is 4 now. 4. And she started going to school. So I think you'll have to, if she is already getting exposed to these things, and if you try to still tell her these are bad, she will start looking at you with a doubt. So you will have to look at those things, bring them and make them a special treat. Yes, you will also have to tell her that, see becha, this is not really nice. अभी बॉर्नविटा में जैसे अर्चिका बोल रही थी चीनी ज्यादा है या मैगी मैदा है, you will have to probably explain it to her, but not starve her or deprive her, because that will give her a quality of going out and not telling you the truth. So एक स्पेशल संडे, एक स्पेशल मंडे, एक स्पेशल सैटरडे बन सकता है. Come in, Archika. Yeah, I wanted to explain what Aditya asked कि moral जो होता है innate होता है, किस तरह से होता है. तो जो moral हमारा होता है वो हम सब में होता है by birth. Okay, it's already there. But जो हम develop करते हैं इसको, moral sense जो develop होती है वो over time होती है. And it happens due to social interactions, and children जो they consider encounter moral development when they interact with their parents and even peers. तो जितनी स्टडीज आज तक हुई हैं उसमें यही मतलब अभी अनक्लियर है. बहुत सारी स्टडीज हैं बट इट्स नॉट वेरी वेरी क्लियर ऑन मैनी थिंग्स, बट दिस इज वेरी क्लियर कि मॉरली हमारे बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं, बट जो डेवलप करते हैं वो चीजें वो हमारे सराउंडिंग से होती है, पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, पीयर्स के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, एंड नेचुरली एक्वायर्ड करते हैं. So अभी clarity is not there. I'll definitely research and read some other papers and I'll get back. Yeah, that's exactly what I think too. Like according to at least Stoic philosophy and a lot of other things, like we have this innate sense of good and right and wrong within us, but we develop it as we grow up. So that is the best answer we have. Going back to the psychoanalytic theory, जो आज सुबह भी हमने बात किया और कल भी बात किया था आदित्य, और जो अर्चिका बोल रही है, हम सब के अंदर 3 लेवल्स के ऊपर हमारी ईगो काम करती है. id, which is the animalistic instinct, second is super ego and third is ego. तो हमारे समाज के कुछ चीजें हमारी इंस्टिंक्टिव हैं, हमारी डिजायर्स इंस्टिंक्टिव हैं. I really want to, I am in my class, as I just gave the example, I want to go out and eat food, I'm very hungry, but my ego is telling me, बच्चे क्लास चल रही है, बैठ जाओ, टीचर बोलेगा क्या बात, where do you want to go, you have to attend this lesson, this is important. एंड ये हमारे एनवायरनमेंट से हम डेवलप करते हैं. हम अपनी ईड को कितना सप्रेस कर रहे हैं. अब सुपर ईगो क्या है? हमारी मॉरलिस्टिक व्यूज, हमें व्यू पॉइंट सिखाए जाते हैं. नहीं, ऐसे नहीं करना है, अंकल के सामने ऐसे नहीं बात करना है, बड़ों से आपको तमीज से बात करना है, आपको बड़ों से आर्ग्यू नहीं करना है. जब ये बातें सिखाई जाती हैं तो ये आपके सुपर ईगो में प्रोग्राम होती है. तो वो आपका मॉरल पुलिसमैन है, तो वो आपको समझाता है भाई नहीं ऐसे नहीं करना. मगर अगर वो ज्यादा बड़ा पुलिसमैन बन जाता है तब फिर से आपकी ईगो बीच में आती है. यार अगर मुझे कंफ्यूजन है, मुझे अपने बड़े लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना है, मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही है, तो वो जो कह रहे हैं आंखें बंद करके थोड़ी विश्वास कर लूंगा. ये तो बोलूंगा ना, पापा प्लीज समझाओ आप ये क्यों कह रहे हो. You understand, there are these 3 things which are innate in us and they keep balancing. There is a balancing act which keeps happening through the ego. Rachika, come in.
Yeah, thank you, Ashima. You explained it well. So, जो मॉडल फाउंडेशन थ्योरी है वो बहुत सारी चीजों पे काम करती है. बहुत सारी चीजें इनेट होती है. लाइक फियर भी हमारे अंदर है, बट आप बच्चे को जब तक वो बहुत सिखाते नहीं हो. अगर एक बच्चा जो इन्फेंट होते हैं 6-7 months, when they start crawling and some lizard or insect is there, then they try and go and grab until his mother shouts no. बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करते हैं कि पता नहीं क्या है, तो बच्चा डर जाता है कि नहीं. बट अगर आप उसको नहीं डराओगे तो किसी भी चीज से नहीं डरता है. देयर आर चिल्ड्रन हु कैन होल्ड लिजर्ड्स भी पकड़ लेते हैं, फ्रॉग भी पकड़ लेते हैं, सब कुछ पकड़ लेते हैं. और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, बिकॉज हम लोग उन्हें उस तरह से सिखा रहे हैं. सो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल जो फैक्टर है हमारा, उससे काम करता है. डर भी हम सीखते हैं, बहुत सारी चीजें एक्वायर ही करते हैं हम. इनेट चीजें होती हैं हमारे अंदर, बट इनेट चीजों को डेवलप करना भी बाहर सराउंडिंग्स में ही है. सो मॉडल के लाइक हार्म करना है, केयर करनी है, फेयरनेस या उसको इन ग्रुप या लॉयल्टी है, हमारा रिस्पेक्ट है, प्योरिटी है. सो ये सारी चीजें जो हमारे फाउंडेशन में आती हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम एक्वायर ही करते हैं. So, Ashima ji, how does it relate to the, system 1 and system 2, like, the animal brain? Like I've read about, I think the ego is more like rational brain. You're telling it to do this and that. And then the other is animal brain that has desires and fears and stuff. Right? Yeah, and the third one is super ego, who is a policeman. वो moral values सिखाते रहता है. So where does it belong? Like I'm not sure. Like rational brain, right? Yeah, you have to rationalize things. तभी तो अगर किसी काम में inconsistency है और वो आप बार बार उसको ढंग से नहीं कर पा रहे हो, would you not go back and ask yourself, यार why is it not going right? क्या मेरे को लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? Why is it that whenever I go talk to people, they don't want to talk to me? Puneet, you want to say something? Part of our brain lies in the rational part of our brain. No, see, moral policing is done by the super ego. देखो हमारे अंदर क्या है. मान लो आपको लगता है यार, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, you want to do something which is very wild, you want to go out and probably explore something. A very small example would be watching porn. A lot of people would not want to watch porn because morally it is wrong. A lot of people will say, क्या हो गया यार, एक वीडियो ही तो है, what is the problem if we watch one video? And you know how porn got very popular, and it was morally really given a very good picture when this girl came into Bigg Boss. What is the name of this girl who was a porn star? What was the name of that porn star who came and Sunny Leone, yeah, Rajat. So Sunny Leone came into Bigg Boss and everybody got to know who is she. She's a porn star. And now there was a total confusion. Is it morally right for a porn star to be there in such open this, that? Okay, here she's not a porn star. She's projecting herself as a very good human being. This, she, that. Maybe being a porn star is her profession. So now is it a moralistic tussle happening between you when you talk of something like this? Puneet. Yes, ma'am. I'm sure. Like, yeah, I mean, I know that everyone has like different definition of like morality. Yes. So, and that depends on your environment, your upbringing. Yes, ma'am. Because liberal people who are extremely liberal, they only care about like these two morality, like morality of harm and morality of fairness. But people who are conservative, sociocentric, they care about morality of loyalty, morality of divinity, and morality of authority as well. Like, so I understand that. See, अगर उसको sections में डालना है, कितने मर्जे भी डालते चले जाओ. Aditya, you're saying something. Yeah. So if morality does belong to the rational brain, that would mean that by the age of 25, everyone would become a little more emotionally, morally mature, because the age 25 marks the the finishing of the development of the prefrontal cortex, national brains, So absolutely. Actually, this ego concept was get hyped when Sigmund Freud developed this और वो लेके आए. But he is not the only one जिन्होंने ego के ऊपर या ego development के ऊपर
काम किया है या थ्योरीज दी है. वी हैव एरिक्सन जो कहते हैं 7 स्टेजेस है, वी हैव अदर ऑथर जो कहते हैं 9 स्टेजेस है. सो इट्स ऑल अबाउट कि आपके यहाँ पे आता है कि आपके बिलीव्स किस पे काम करते हैं. अगर मैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ती हूँ और मुझे लगता है मैं उसे रिलेट कर पा रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग ठीक है ईगो एंड सुपर ईगो जो है ये कंसेप्ट फिट बैठता है, तो मेरा बिलीव वो बन जाएगा. आई विल फॉलो हिम एंड आई विल स्टडी हिज थ्योरीज. बट वी हैव कैरन हॉर्ने, वी हैव हेल लॉर्ड केटल आ जाते हैं. लेट मी ब्रिंग यू बैक टू द इंडियन स्क्रिप्चर्स माय डियर फ्रेंड. या इंडियन स्क्रिप्चर्स एज वेल. सो इट्स शिव सूत्र सेज चैतन्य आत्मा, योर आत्मा इज कॉन्शियसनेस. सो नाउ अंडरस्टैंड दिस. So all your moral beliefs or your value system, everything is yes set. मतलब जब when you are able to convince yourself, you know, whenever you are able to convince yourself to be true, ultimately becomes your beliefs. So जब भी आप जिस भी चीज के ऊपर आप काम करेंगे और आपको लगेगा अपने आप दिमाग को, इट्स नॉट अबाउट फ्रंटल का है हमारा ये लोब दूसरा है या कॉर्टल है, व्हाटएवर इज इट, व्हाट 4 लोब्स है उन पे काम नहीं करते. हमारा दिमाग रैशनल पे काम नहीं करता, कॉन्शियस सबकॉन्शियस पे काम करता है. उसकी थ्योरी अलग आ जाती है, उसकी थ्योरी भी बहुत सारी मिलेंगी आपको. तो इट्स लाइक नॉलेज तो जितना आप गेन करोगे, बट आप किस पे अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हो. जो थ्योरी आपने पढ़ी है उस पे आपका ब्रेन कह रहा है कि ओके ठीक है ये रिलेट करता हूँ, ये मुझे समझ आ रहा है, वो मेरा बिलीफ बन जाता है. फिर हम चूज करते हैं बिलीव और चेंज भी करते हैं. Archika ji, so I'm saying that what you said, like what we confirm to be true, but if it is something like I'm walking right now. Not confirm, Aditya, convince. When we get convinced. Okay. Not confirm. Okay. Then it's okay. Like I think if we logically arrive at a conclusion, then it is not a belief, right? No. When we get convinced, you know, my mom told me कि ऐसा ही होता है, मैं convinced हो गई, तो वो मेरा belief बन गया. बट उसके बाद मेरे को एक नया एक्सपीरियंस हुआ, मैं बाहर गई, मुझे कुछ और मिला, मम्मी ने तो ऐसे बोला था बट ये तो डिफरेंट है यार, तो मेरा बिलीफ चेंज हो गया. दही चीनी खा के जाओ बहुत अच्छा होता है, जो दही चीनी नहीं खा के गया था वो टॉप कर गया, ऐसा क्यों? बिलीफ, यू नो. तो जहां मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया विद माय थॉट्स. आइडियोलॉजीज कैसे बनती हैं? आपकी बिलीफ सिस्टम के साथ बनती हैं. आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनका आप सेट बनाते हो दिमाग में, ये मेरा सेट है, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, तो ये मेरी आइडियोलॉजी है. मेरे को ऐसे लाइफ में चलना है, इस तरह से करना है, तो ये मेरे बिलीव्स हैं, मैं इन्हीं पे काम करता हूँ, मेरे उसूल हैं ये. दिस इज हाउ वी वर्क. नो देखो, अगर आपके कोर बिलीव्स आपको नेगेटिव बनाते हैं, आपको रिजिड बनाते हैं, आपको इनकंसिस्टेंट बनाते हैं, आपका सोच का दायरा छोटा कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं बस ऐसा इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, एंड यू आर नॉट रिसेप्टिव टू चेंज, दैट मीन्स दैट दीज कोर बिलीव्स आर नॉट राइट. अगर आप रिसेप्टिव है, नॉन जजमेंटल है, आप कहते हैं कि भाई ठीक है, जो कर रहा है उसके लिए अगर ठीक है तो मुझे किसी को क्रिटिसाइज करके क्या करना है, लेट मी वर्क ऑन माई डेवलपमेंट, लेट मी अंडरस्टैंड कि मेरे जो कोर बिलीव्स हैं, मेरे जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, क्या उनमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या मैं उनको चेंज कर सकता हूँ, क्या उसमें कुछ ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे बच्चे होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उनको एक आदत होती है वैलिडेशन लेने की. मम्मा मैंने कितना अच्छा बनाया, मम्मा कहेगी ओह यस माय गॉड माय डियर चाइल्ड यू हैव डन इट वेरी गुड, ये थोड़ा ऐसे नहीं, ऐसा चेंज कर लो. अगर हमको एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत इतनी पड़ जाए कि अगर हम बड़े होकर भी कोई काम कर रहे हैं और हमें पता है हमने अच्छा किया, मगर जब तक उसको कोई प्रेज नहीं करेगा, हमारे दिमाग में रहेगा यार मैंने गलत किया, इसीलिए कोई मेरे को प्रेज ही नहीं कर रहा है. So what is this? Is it a faulty core belief or is it a right core belief? Anybody? Well, I don't think it's right. Like I don't want, you know, some like if you are hung up on getting somebody else's praise, you are bound to get disappointed a lot of times. So very true. So it's a faulty core belief? Yes. So one will have to work towards changing. So इसीलिए खुद से कनेक्शन बनाते रहना जरूरी है. It is very important to keep making a connection with yourself. Okay, and one more thing, Ashima ji, that you were saying that we should have, you know, we should be able to change our beliefs if they are faulty. So I think it's there are levels of belief too, because some beliefs, you know, we believe in something too strongly. So they become too deep rooted. We do, like
for example, if somebody is absolutely convinced that that God exists, he believes in God, he loves God, he sees God in his dreams, then there are other people who just visit God once in a while, and when their wishes are not granted, when their wishes are not granted, they will shift to some other God. So yeah, shift to other God, तो मतलब उसका belief change हो रहा है and he is testing. Yeah, so that's what I was saying, that some beliefs are if we don't believe in something too strongly like the second person, then his belief can change. But if he is absolutely convinced like the first person that it exists and I believe in God, and he is so strongly believing in it, even in his dream he is seeing God. Like Arjun how will is saying, or he will become atheist. How will Actually, he? give your answer yourself, I think Aditya. बिल्डिंग ऑन व्हाट यू आर सेइंग, अगर मेरी बात एक भगवान नहीं मान रहा है, वो भगवान मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, मेरे को लगता है ये वाला भगवान मेरी बात नहीं मान रहा है, चलो दूसरे वाले भगवान के पास चलते हैं. सो हु इज एट फॉल्ट, भगवान और मैं? I don't think God has any, like his job is not to grant your wishes, Yeah, work towards them. Be consistent. Be persistent. Think what you're doing is realistic or no. अगर मेरे goals realistic नहीं है, and yes, when we talk about Indian scriptures, we talk about the karma theory. So how my karmas are, what I'm doing, my past karmas, my present karmas, how what are the things which I did in the past, I don't know. So we rely on that. Yeah, if you want to be an atheist, you can just keep doing what you feel is right. And as it says, पूरी कायनात शिद्दत से आप तक वो चीज लाएगी जो आप चाहते हो. So please believe in yourself in that case. Because yoga philosophy talks of developing a system within yourself wherein you are able to get connected with your own super consciousness by yourself. You don't need God to do that. God is manifestation, God is true, God is imagination, we don't know. So if you have a scientific yoga system wherein you can have your own consciousness, see क्या होता है ना, हम लोग क्योंकि हमारे beliefs ऐसे हैं, हमारे cognitions ऐसे हैं, हमारे value systems ऐसे हैं कि हम कई बार डरते हैं उनको change करने से. और फिर आगे कौन बढ़ता है? वही जो चैलेंज करता है, रैशनलाइज करता है, वो उसको समझने की कोशिश करता है. Isn't it? Yeah, I think this is the difference between jnana and manna. Like I'm not saying God doesn't exist or something. But if some person is some following the path of yoga, or Vedanta, and he has after a long period of meditation and stuff, he has finally become a Brahm yogi. He have realized the Atman within. He had become a Brahm yogi. Then he has experienced God. Absolutely. So if he has experienced God, if he has, that is not a belief. Because he knows that he have explored it and then finally arrived at something. That is not a belief, I think. But if he has not, if he has not experienced the Atman within and he is just believing in some stories, then I think that is a belief. देखो, अगर आपने आत्मन अचीव कर लिया, फिर तो आपको बिलीव्स की जरूरत ही नहीं है. यू आर बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ बीइंग व्हाट यू आर. So 50 seconds left. Wonderful conversation with Aditya, Archika, Reena, Puneet and Utsav could not unmute. Utsav, अब unmute करोगे? 40 seconds रह गए, my dear friend. अनम्यूट साथ देखो, अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपनी प्रोफाइल वाला बटन दबाओ, उस पे एक ड्रॉप डाउन आएगा, उस पे लिखा होगा अनम्यूट. Utsav, can you do that? Are you listening to me? Please write down yes or no. Bye, ma'am. It was nice talking to you. Thank you so much, guys. It's 17 seconds still. Hold. Yeah. Utsav, say hi. Utsav, He's go ahead, not man. going to Come on. unmute. What are you doing? Yeah. Okay. Utsav, Yeah, the next thank you. circle probably we can join you. Thank you very much, everybody, and please do participate and please do write questions if you have.